Assalamu alaikum, dear friends and students, how are you? I hope you will be fine. We are here to discuss about our next topic, and our today's discussion is about first kind, first class, first category of part of speech, and this is known as a noun. This is known as a noun. प्यारे तालिब इल्मों और दोस्तों, आज हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं फिर से एक दफ़ा अपनी क्लास को लेने के लिए, अपनी क्लास के आगाज़ के लिए। और ये हमारी क्लास है अज्जाए कलाम की पहले किस्म के बारे में, और ये जो किस्म है इसको इस्म बोला जाता है। Then we will see about a noun. When we talk about a noun, we say that a word that refers a place such as like Mubashir, an animal such as like cow, goat, buffalo, a thing such as like chair, an idea such as like justice, an action such as like movement. After this, it will also be referred to a place such as Multan, and in this way this is known as a noun. A word that refers to a person such as like Mubashir, a thing such as like chair, a place such as like London, an animal such as like goat, an idea such as like justice, a quality such as like goodness, or an action such as like movement is known as a noun. इसी तरीके से हमने बात की है कि एक ऐसा लफ्ज़ जो एक शख्स की ज़ात का हवाला दे, शख्स का हवाला दे जैसा कि मुबशिर, जो एक चीज़ का हवाला दे जैसा कि कुर्सी, जो एक जगह का हवाला दे जैसा कि लंदन, जो एक जानवर का हवाला दे जैसा कि बकरी, जो एक खासियत का हवाला दे जैसा कि अच्छाई, जो एक आइडिया का हवाला दे, ख्याल का हवाला दे जैसा कि जस्टिस, जो एक एक्शन, जो एक अमल का हवाला दे जैसा कि हरकत। इस तरह के वर्ड को हम लोग नाउन बोलते हैं। और इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ वर्ड दैट गिव अ नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग. It means it can be also called a naming word. The other definition of noun can be said कि a naming word is known as a noun. अगर हम दूसरे अल्फाज में नाउन की तारीफ़ करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं कि it is also called a naming word, कि इसको नाम देने वाला लफ्ज़ भी बोला जाता है। तो इस तरीके से अब तक हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया। Now we will discuss about the kinds, categories or types of noun. When we talk about the types of noun, dear students and friends, there are 8 various types of noun. Furthermore, we classify the noun on the basis of gender and on the basis of number. But except on the basis of gender or number, we can classify a noun into 8 various kinds, which are given here. First one is known as common noun, second one is known as proper noun, third one is known as abstract noun, fourth one is known as material or concrete noun. Fifth one is known as countable noun, sixth one is known as uncountable noun and or mass noun. Uncountable noun is also known as mass noun. In this way, at 7th number, the category, the kind of noun is known as collective noun, and at the 8th number, this is known as attributive noun. डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों और तालिब इल्मों, अगर हम नाउन की इकसाम की बात करते हैं तो 8 मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास कॉमन नाउन है, फिर प्रॉपर नाउन है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर कंक्रीट और मटेरियल नाउन है, फिर हमारे पास काउंटेबल नाउन है, फिर अनकाउंटेबल नाउन या मैस नाउन है, फिर हमारे पास एट्रीब्यूटिव नाउन है। फिर इस तरीके से हमारे पास 8 मुख्तलिफ इकसाम बनती हैं नाउन की, जो कि मैंने अभी डिस्कस किए हैं। इस तरीके से इफ़ वी study the types of noun on the base of gender. On the base of gender, we will talk about there are 4 categories of noun on the base of gender. First is known as masculine. It will represent a male gender of an animal, or maybe living things. Second one is feminine. It will represent a female gender of an animal or a living thing. Third one is common. It will represent both male or female, either male or female. It can represent both. And the fourth one is neuter.
It will be neither sport, it will be neither describe the male or female gender, neither male nor female gender. In this way, प्यारे तालिब इल्मों और दोस्तों, अगर हम लोग इसम को जिन्स की बुनियाद पे क्लासीफाई करें तो इसकी 4 मुख्तलिफ इकसाम बनती हैं। सबसे पहले को हम लोग मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। ये वो नाउन होते हैं जो किसी भी जानवर के, किसी भी जानदार चीज़ के नर कैटेगरी को ज़ाहिर करते हैं, मेल को, जैसा कि बुआए यानी कि लड़का। अब आप लोग देखें ये मेल है, ये मेल जेंडर को शो कर रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट फेमिनाइन, अगर हम देखें फेमिनाइन को तो ये रिप्रेजेंट करती है, ये ज़ाहिर करती है किसी भी जानवर की या जानदार चीज़ की जो फीमेल होती है, जो मुअन्नस होती है, यानी कि उसकी मादा जो जिन्स है उसको ये ज़ाहिर करती है। जैसा कि मिसाल लेते हैं हम लोग गर्ल की, बॉय को देखें तो वो मस्कुलाइन है, गर्ल को देखें तो वो फेमिनाइन है। बॉय मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो फेमिनाइन है वो यानी कि गर्ल वो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें कॉमन को तो इसमें दोनों की बात आएगी कि ये मेल को भी शो करेंगे, फीमेल को यानी कि नर को भी शो करेंगे, मादा को भी। जैसा कि हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं तो पेरेंट्स में देखें आप लोग दोनों बातें आ जाती हैं, वालिद साहब भी और वालदा भी, यानी कि हम लोग इनको लिख देते हैं वालदैन। तो इसमें दोनों की बात हो गई है, वालदा की भी हो गई है, वालिद की भी हो गई है, तो ये कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। उसके बाद है न्यूटर। न्यूटर में आप लोग देखें कि ना तो ये नर को ज़ाहिर करती हैं और ना ही ये मादा को। जैसे कि मैं बात करता हूँ बुक की, किताब की जब मैं बात करता हूँ तो किताब ना तो नर है और ना ही किताब मादा है, तो ये हमारे पास होगी न्यूटर जेंडर। In this way we have studied about the types of noun, the classes of noun, the categories of noun, the kinds of noun on the basis of gender. There are 4 categories, 4 kinds, 4 types of noun on the basis of gender. First one is known as masculine, second one is known as feminine, third one is common, and fourth one is neuter. Then we will move to our next thing, which one is types of noun on the basis of number. If we talk about the types of noun on the basis of number, there are 2 types. If the described things is 1 in number, then it will behave as a singular noun. If the described things, if the expressed things is more than 1 in number, then they will behave as a plural noun, as a plural noun. इस तरीके से देखो दोस्तों और तालिब इल्मों, अगर हम लोग नाउन को नंबर की बुनियाद पे क्या करें, क्लासीफाई करें, इनकी इकसाम बनाएं, तो यहाँ पे 2 किस्म की होती हैं, या तो नाउन वाहिद होती हैं या फिर नाउन जमा होती हैं। अगर वो एक है तो वो वाहिद है, अगर मोर देन 1 है तो वो क्या होगा, जमा होगा। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ड नाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ड नाउन, वी सी दैट द वर्ड नाउन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमिन। द वर्ड नाउन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमिन विच मीन्स नेम। अगर हम गौर करें कि नाउन का ओरिजिन देखें कि इसका इंग्लिश ज़ुबान में आना कैसे हुआ, तो ये लातीनी ज़ुबान से इंग्लिश ज़ुबान में आया, अंग्रेज़ी में आया, और लातीनी का कौन सा लफ्ज़ था जो। इसी तरीके से अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ये नोमिन है, और नोमिन का मतलब है नेम। असल में जो नाउन ओरिजिनेट हुआ है ये लैटिन वर्ड नोमिन से हुआ है, और इस नोमिन का क्या मतलब है, नेम। इफ वी डिस्कस द ओरिजिन ऑफ नाउन, द नाउन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमिन विच मीन्स नेम, एंड आफ्टर दिस the nomen will be changed into Anglo-Norman French or late modern English into noun. So today the word noun is present in this form noun, but its origin is nomen, and nomen belongs to Latin language. In this way we have in today's discussion topic we have studied about noun, first part of speech, noun, and we have discussed definition of noun, types of noun, and types of noun on the base of gender, types of noun on the base of number, and the origin of noun. With this I want to wind up my topic, and God willing we will soon meet in our next video lecture. Up till that time I want to say goodbye. Allah Hafiz.